Hey everyone, welcome back this video, and this video will be a game changer for you if you are running Facebook advertisement. Okay, so Facebook advertisement we can run our business page. Okay, but it is not the right method. So what is right method? In this video I will reveal what is the best method, and you can apply this method. Definitely you will create a perfect setup for your advertisement. Okay, सो मुझे बताइए कौन सी ऐसी ऐसी मेथड है जो आप लोग अभी रन कर रहे हैं। कमेंट बिलो और मुझे बताइए कि किस मेथड से आप अभी अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं। ओके, सो आई विल रिवील वेरी इजी 4 steps. 4 steps you will know what is the right method to run Facebook advertisement. Okay, so let's learn. And if you are new, okay, in this Facebook advertisement, so this will be a game changer for you because you are creating your setup, pre-setup before running any Facebook ads. Okay, आपने अभी एडवर्टाइजमेंट शुरू ही नहीं किया है तो ये जो सेटअप है ना वो प्री सेटअप बोला जाता है आपका फेसबुक एडवर्टाइजमेंट रन करने से पहले। ओके, सो समझिए, ध्यान दीजिए, और अगर आपके पास पेन एंड पेपर है तो राइट डाउन इन योर नोट. It will be a very important for you to set up and create all this system before running Facebook advertisement. Okay, so let's start, and I will share my screen so I can give you a perfect presentation to you and you can understand very well. Okay, so कैसे आप समझ सकते हो कि right method क्या है. Okay, so these are the 4 steps. So number 1 step is your profile is your ownership. If you don't know that whatever you create your business, you need first your own profile, and your own profile will be your admin. You are the admin for your business. Okay, so this is the proper way, and profile is the importance for you before creating your business. Okay, so your profile is your ownership. And what are the 3 steps to create good profile? So optimize your profile. You have created already profile, you have already your profile, right? So optimize your profile. How you optimize? You can go through all the privacy policies of Facebook and the contact number and email address. You need to create your account security. Okay, दिस इज द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर प्रोफाइल. एंड देन डबल सिक्योर योर प्रोफाइल. आप कैसे अपनी प्रोफाइल को डबल सिक्योर कर सकते हैं? ओके, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है. 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी you need to develop. If you don't know how to make sure your profile secure, so also I have created a previous my video how to secure your Facebook account, so you can go through in my YouTube channel, you can find that video as well. सो डबल सिक्योर योर प्रोफाइल. आप अपना 2 वे जो बोला जाता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अटैच करके आप अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं और वो कोड यहाँ पे डालने के बाद ही आपका अकाउंट लॉगिन हो सकता है. दिस इज द 2 वे ऑफ ऑथेंटिकेशन वी कैन से. ओके, और यू कैन यूज गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन एज वेल. दिस इज द मोस्ट सिक्योरिटी एप्लीकेशन you can use. And third one is create your business page. Now you are able to create your business page. Okay, and when you create your business page from your profile, so where do you go? At left side there is the option of pages. When you click that pages, there will be a option comes in front of you. There is a create new page. When you click that create new page, you can create your entire business page. Okay, I have created already video particular only how to create your business page. Okay, you can go through in my YouTube channel, you can find that video. So these are the steps. Your profile is your ownership and you can create your first business page from here. Okay, and what will be our second step? Second step is optimize your business page. You have created your own business page right now. Okay, so how you can optimize your business page? There are 3 steps. Design your business cover photo and your logo.
I have already created video, design your cover photo and profile photo. Okay, you can use Canva is the good application, and you can design your cover image and your profile logo as well. Okay, it is very easy steps. I have already created for 15 minutes video, and in within 15 minutes you can learn how to design your cover photo and design your logo. It is the best tool you can use. And second step is add all your business details. Business page, that means your online shop. So without putting your contact details on your online shop, how your customer can contact you? So make sure that you have all your contact details in your business page, like email address, your WhatsApp number, your phone number, your address, your website address, your social media links, all are make sure be properly attached in your business page. Okay, and third step is daily value posting related your target audience. So आप मुझे बताइए, अगर आपका बिजनेस पेज है, ऑनलाइन बिजनेस शॉप है, अगर वहां पे कोई पोस्टिंग ही नहीं होगा, वहां पे वीडियो नहीं होगा, कुछ भी इमेजेस शो नहीं करेगी, कोई प्रोडक्ट का वहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होगा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये आपकी शॉप है? ओके, सो इमेजिन दैट यू हैव अ फिजिकल स्टोर, एंड फिजिकल स्टोर विदाउट स्टॉक, how can you make sure that you will get customers, you will get profit, you will get sales without putting your stock in your physical store? So same applies here. If you are running your online business page like Facebook online business page, so you need to put your content here as a video form, as image form, okay, written form. You can create your content in your business page. That is the meaning that now people are able to come to your shop to buy something from you. Whatever you have kept in your business page. So make sure, आपको क्या करना है, आपको वहां पे पेज के अंदर आपको पोस्टिंग करते रहना है। ठीक है, आपका कस्टमर्स का आप टेस्टिमोनियल भी पोस्ट कर सकते हो, आपकी प्रोडक्ट के बारे में आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देके भी आप पोस्ट कर सकते हो, खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू डू without wasting any day. Every day you need to post. This is my recommendation to you. Okay, so next step we have completed optimizing our business page, and third step will be a create business meta. Now we are able to create our business. Okay, we have created our business page, but now we are going to create our business meta. In meta business suite, that means we can use Facebook business meta suite to create our business. Okay, how you can do? These are the 3 steps. Create business manager. When you go business meta business suite, and there is an option to create business manager. You can create that business manager using meta business suite. Okay, and get all rights as you are the owner. एंड देन आफ्टर यू कैन गेट, आप अपने आप को वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर बना दीजिए, अपने आप को ओनर बना दीजिए ऑल आपके बिजनेस जो भी आपने नेम रखा है। ठीक है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं दूसरी एक आपको बात इंपॉर्टेंस बता दूं कि लोगों का बहुत क्वेरी आता है मेरे सामने, वो बोलते हैं कि कैसे हम क्रिएट करें ये सब। समझ लीजिए आपका एक ऑफलाइन बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस का नाम रखा है, वॉट एवर यू हैव योर ओन नेम, ओके, एंटिटी। ओके, लेट्स से यू आर सोलोप्रेन्योर। ओके, आप एक ही पर्सन जो है जो अपना बिजनेस करते हो, नहीं पार्टनरशिप, नहीं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सोलोप्रेन्योर ओनली। सो यू हैव योर ओन बिजनेस नेम, so you can create this business name as your business manager name. Okay, your business name, and you are the business manager of your business. So make sure that whatever you have your physical store name, same applies here as your online store name. Okay, then you can add yourself as the owner of your business. Okay, this is the step you need to go through to make sure you are the owner of this store. And then create your ad account, same debit card account name. What happen if let's say you have your full name in your bank account, okay, but let's say you are creating your advertisement account here and you keep only your short name. So what happen, Facebook will ban your advertisement account.
Okay, because Facebook doesn't know what is your name and what is your bank account name. It should be same. So Facebook understand that you are the right person, you are genuine business person. Okay, you are not any we can say the fraud person. Okay, so make sure Facebook wants us to be genuine. Okay, you are the genuine business person. So whatever you put you keep your every data in your business or in your business page, make sure all are genuine. Okay, it should be genuine. So these are the steps you need to create your business, and you are the business manager of your business. Okay, and last step is adding assets in your and people in your business. How you can add business assets and people? So what do you do after creating your business? You are the business manager, then you can add your assets into your business. Okay, कैसे करोगे आप? There is a option there, add assets. So वैसे जैसे आप क्लिक करोगे एड एसेट के ऊपर, आप पेज को वहां पे डाल दीजिए, अपना बिजनेस पेज है उनको डाल दीजिए अपने बिजनेस के अंदर, ताकि अब ये बिजनेस जो है उसके अंदर आपका ये शॉप आ गया। शॉप मीन्स आपका बिजनेस पेज आ गया, राइट? एंड देन एड अकाउंट, आपका जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है आपने क्रिएट किया है पहले, वो भी आप ऐड कर सकते हो, या आप नया क्रिएट करके उनको भी आप बिजनेस के अंदर लेके आइए। जो उनके पास राइट्स है एडवर्टाइजमेंट रन करने का, तो ये बिजनेस पेज है उनका भी ओनर आप बन जाइए। ठीक है, और देन एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो है एड अकाउंट का भी ओनर आप बन जाइए। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आता है। This is the right method. Okay, and create your first ad from the ad manager. Now you are eligible to run your first advertisement. Okay, this is the system, and these are the 4 steps you need to develop before running any Facebook ads. Okay, this is the right system, this is the right method to run your Facebook advertisement. Okay, so I review again what are the 4 steps. Number 1 is your profile is your ownership. You can create your profile, optimize your profile, and then you can create your business page from your profile. This is the first step. Second step is optimize your business page. आपने क्रिएट कर लिया अपना बिजनेस पेज, अब उनको ऑप्टिमाइज करिए, वहां पे सारी डिटेल्स डाल दीजिए, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट डाल दीजिए, अपना सोशल जो लिंक्स है, सोशल मीडिया की जो लिंक्स है वो भी डाल दीजिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए, वहां पे व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू to generate good quality leads. Okay, and third step is create business meta. Now you are eligible to create your business, okay, using meta business suite. Okay, and fourth step, last step is आपका जो बिजनेस जो अभी रेडी हो गया है उनके अंदर आपकी एसेट्स डाल दीजिए, जैसे पेज हो गया, आपका एड अकाउंट हो गया, वो सब एसेट्स बोला जाते हैं. ठीक है, वो सब डाल दीजिए, और पीपल को ऐड कीजिए, जो आपके पास टीम है. अगर इफ यू हैव अ टीम in your business, you can add those people as your asset. Okay, and different roles you can define with different assets. Okay, these are the 4 steps you need to apply before running Facebook ads. So guys, if आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ओवरवेलमिंग हो रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मेक श्योर एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, आप सीखिए, देखिए, और स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो मैं मेरे वेबिनार जो हो रहा है उसमें मैं सिखाने वाला हूँ सबको. और वो वेबिनार जो है ना, वो नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर क्लिक करके भी मेरे वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड यू विल लर्न व्हाट आर द बेस्ट स्टेप्स एंड मेथड टू रन फेसबुक एडवर्टाइजमेंट बाय योरसेल्फ. ओके, सो these are the very simple steps I have already given you, and I assure that you will start your pre-setup before running any Facebook advertisement. Okay, so guys, if you like this video, you can hit like button below, and if you have already set up your pre-setup before running any Facebook ads, you can comment below, and you can comment that already pre-setup. Okay, and make sure you subscribe my YouTube channel, so whenever I upload new video, you will get notified, and as a priority you can see my every video. So let's meet on next video. So bye bye.